Good evening, everyone. On a wonderful Friday evening, it is 4:30 again. I think we will give it a very slow start today because the DTOs are still joining, and I was having a session with your teams. So, can I request the DTOs a single question, especially DTO Akola? Your team was there, Dr. Manish. Have you received any message from your team today that they want to volunteer for PDSA? Any DTO, have you received any SMS, any text message from your teams? Yes, sir. I got a message from my team member. Okay. They will be volunteering. Yes. So this is the outcome of one single session with your team. अभी तो 4 महीने बचे हैं डॉक्टर साहब. And any other DTO who got the message from his team? Yes sir. बहुत अच्छा सेशन था. मैं खुद भी ज्वाइन थी सर उसमें, लेकिन अरे बीच में आप थे? अरे मैंने आपको एक्नॉलेज नहीं किया मैंने. नहीं मैं ज्वाइन हुई थी, फिर बीच में एक मीटिंग थी कमिश्नर सर के साथ, तो इसलिए मैं उसमें लीव कर. ओके, तो आपकी टीम ने भी वॉलंटियर किया है पीडीएस से ज्वाइन करने के लिए? यस सर. Very nice, wonderful, wonderful. Any other DTO whose team has sent a text message on their own? आपने तो पूछा भी नहीं अभी तक कि हम पीडीएस से टीम बनाएंगे. Sir, District Nandurbar has sent all the options, sir. You were there yourself leading, Dr. Abhijit. You were leading the charge. Sir, thank you, sir. Thank you, sir. And what I saw was when I raised my 2 hands in commitment, you also raised your 2 hands in commitment. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I observed. We are following, sir. Absolutely. Yes. You have a very fabulous team. Wonderful. Okay, thank you. Thank you, sir. Any other DTO whose team has volunteered? Yes, Bhivandi? Okay. So at the same time, I think Dr. Lokesh is talking to somebody. Dr. Lokesh, swagat hai. I am very well here. Ramanji, how are you? Good, sir. How are you? I'm fine. Nice to see you after a long time. Nice to see you, sir. Nice to see you after a long time. And wonderful that you are here. Dr. Ripudaman is also here. Yeah. And I think I will not waste any more time. Today is a very important session. So I welcome you, Dr. Manoj. Good morning. And good morning and welcome to all our DTOs, and glad to hear that there was a very exciting and energizing conversation with the NTP staff. DTOs, this is really important. You know, often क्या होता है कि अपन को knowledge आ जाती है, पर जब आप knowledge बस आपके पास ही रखते हैं, अकेले रखते हैं, and you keep it within yourself, it doesn't have that value that it has जब आप सबसे share करते हैं. And that is what we were doing today, is sharing the PDSA knowledge with the entire staff. So wonderful, great job, Commodore Raman and the team. Absolutely. Of course, it is a team which takes the credit in every which way. So we had about 480 plus participation, and a lot of volunteers have come up. And Dr. Pratibha, welcome and good evening. Good evening, Ramanji. Thank you so much. And Dr. Vineet, good evening and welcome. Namaskar. Over to you, Dr. Pratibha, for leading the session on. Thank you so much. Thank you. Please go ahead. So I hope my screen is visible to you. Yes, it is. Okay, great. Thank you. Thank you, Jayaji, for acknowledging that it is visible. Yeah. So hello DTOs, welcome to the QI session once again. So today we have the learning objectives, which is on your screen. So today we will be talking about, process maps, and we will be talking about how to lay a process map, how to analyze it, and how to do the RCA, that is root cause analysis, and how to, understand the fishbone diagram. Please don't get worried up because of all these technical wordings. You will understand all these things by heart by the end of the session. So as a ritual, we proceed with the revision of the previous session. Here also we are going to do a bit of a revision before we proceed forward. So model for improvement, we answered these 2 questions before we
proceeded to the measures. We did the what we are trying to accomplish. We made the aim statement. Then how we will know that the change is an improvement. We created the measure, that is the process measure, step by step processes, and the result, which is the outcome, right? And in previous session, we also showed a glimpse of a process map to you, right? In that, it was by the DTO Gwalior. It was shown to you how the system was flowing, because the process map is a link between the measures, right? So right now we are towards the end of our planning. We have done the problem statement, we have done the aims statement, we have done the process measure and the outcome measure. Today we will be focusing on process map and the root cause analysis. So before we move forward, I like to welcome Dr. Lokesh Chandra Gupta, DTO Muzaffarnagar. He was from our batch 3, and today he will be presenting his PDSA, basically focusing on the process map. Dr. Lokesh. Yeah, good evening, Dr. Kohli. How are you? I am good, Dr. साहब कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ. Thank you for calling me as alumni DTO. Thank you. ग्रेट सर, ग्रेट. हमेशा आपसे बहुत एनर्जी मिलती है, और आज हम यही चाहते हैं कि आप वही एनर्जी हमारे बैच 6 के DTOs को दें और अपने काम को आप दिखाएं और इनसे 2 शब्द बात करें पीडीएसए के बारे में. Over to you. Sure, मैं first I welcome all the 6 batch DTOs. Perhaps they are from the Maharashtra. मेरा सबको नमस्कार है. I hope you will be enjoying these sessions by SETI. Marvelous thing. Yes. और जो लर्निंग है इनके PDSA के थ्रू, वो रियली मार्वेलस है, नॉट ओनली फॉर प्रोफेशनल लाइफ बट आल्सो फॉर द इवन फैमिली लाइफ आल्सो. तो जो हम डायरेक्टली आए अपने टॉपिक पर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. लकीली विद द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से, मेरा डिस्ट्रिक्ट एसएनसी में ब्रॉन्ज अवार्ड विनर था जब हमने पीडीएसए के साथ वर्क करना शुरू किया. And this time silver award winner bhi hai, and we are in the queue whether we will get gold or not, but we will do our work. So this is all about my district. And first, जैसा डॉक्टर कोहली ने कहा कि पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, देयर आफ्टर एम्स एंड स्टेटमेंट होते हैं. तो जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइवेट नोटिफिकेशन वाज ए चैलेंज, तो उसके लिए हमने फिर थॉट बनाया कि we will change the things as per the PDSA planning. And PDSA practically वो सब है जो शायद हम कर रहे हैं, वो सब है जो हम कर रहे हैं, लेकिन मेंटल लेवल पर कर रहे हैं. मेंटल लेवल पर कर रहे हैं, उसको ऑन पेपर ले आए तो इट बिकम्स स्मूथ एंड रिकॉर्डेड. तो ये हेल्प करता है हमको बहुत ज्यादा. तो जैसे मेरे यहाँ हमने प्लान बनाया कि हम अपने जो प्राइवेट नोटिफिकेशन है उसको 40% एनहांस करेंगे बेस लाइन से. आई वॉज वेरी एंथुजियास्टिक. मैं उसको 70% करना चाहता था, बट पीपल फ्रॉम दी सेटी टोल्ड मी कि डॉक्टर साहब आप अचीव कर ले तो बहुत अच्छी बात है, बट एक ऐसे टारगेट को रखो अपना एम जो इजी हो और आप अचीव कर सके, आपको अच्छा फील भी होगा, और आप 70% कर लेंगे बहुत अच्छी बात है. तो ये आप देख रहे होंगे हाउ मच चेंज इट इज. 40% हमको करना है बेस लाइन 30% से. इसके बाद कितने टाइम ड्यूरेशन में हमको करना है ये हम डिसाइड करते हैं. तो 3 months का टाइम हमने डिसाइड किया था. मेरा ईयरफोन के लिए. एंड एम स्टेटमेंट हमने फिर प्लान किया 23%. हाँ, 23% से 30% करेंगे, और फिर हमको बेटर मिला तो 40% भी हमने प्लान कर लिया. फाइनली एक डिसीजन हुआ कि हम सब लोग 40% के लिए करेंगे. प्लीज नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर सर. ओके, तो दिस इज द प्रोसेस मैप. प्रोसेस मैप क्या, इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारा नॉर्मल फ्लो है, मेरा तो प्राइवेट नोटिफिकेशन के लिए था, बट नॉर्मल फ्लो जो भी पेशेंट के स्टार्ट होने से लेकर और जहां तक हमारा टारगेट है उसको हम पेन डाउन करते हैं.
उसमें जो मॉडल्स हमको एक्सेप्ट होते हैं, जिसमें फिश भी है, वो हमारी टीम, हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, देवलीना वाज माई कोऑर्डिनेटर, वो हमको हेल्प करते हैं इसको बनाने के लिए। तो एज वी स्टार्टेड कि पेशेंट प्राइवेट प्रैक्टिस में डायरेक्ट पहुंचेगा, प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास कोई फार्मासिस्ट के साथ के माध्यम से पहुंच सकता है, या उसको जानकारी हुई हो आईईसी के थ्रू तो पहुंच सकता है, एंड डॉक्टर उसको डायग्नोस्टिक लैब के लिए भेजता है, और डायग्नोस्टिक के बाद टेस्ट हो जाता है, रिजल्ट अपडेट हो जाते हैं, पेशेंट शुरू हो जाता है, बट हमको नोटिफाई नहीं होता। तो हमने बॉटल नेक्स पर वर्क किया कि या तो लैब से हमको नोटिफिकेशन में हेल्प नहीं मिल रही है, या पेशेंट जो नोटिफाई होने चाहिए क्लिनिशियन के द्वारा वो हमको नोटिफाई नहीं हो रहा। तो ये So, हमारे Dr. Lokesh, if I may ask you कि आपने ये बताया कि आपकी लो नोटिफिकेशन जो है रेफरेंस फ्रॉम लैब टेस्ट पीपी, आपके जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, ये आपको कैसे पता चला? देखिए, बेसिकली क्या है, हमारे पास एक तो नेशनल लेवल से दिया हुआ एक टारगेट होता है कि प्राइवेट नोटिफिकेशन इतना होना चाहिए, वो उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, जिसके माध्यम से हम उस व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली रिपोर्टिंग का भी सिस्टम था, प्लस एक एनेक्सर है जिसमें मंथली रिपोर्टिंग लेते थे। तो कैजुअल एटीट्यूड की वजह से शायद डॉक्टर्स कभी हमें मंथली रिपोर्ट कर दिया, कभी डेली रिपोर्ट कर दिया, फीडबैक मिलते थे। जब हम रिपोर्ट्स को फिल्टर करते थे तो हमको लगता था कि ये रिपोर्ट मिस हो रही है, और इसको फाइनली बाद में मेरे यहाँ पीपीएस से एक ऑर्गेनाइजेशन आई, उन्होंने जब वर्क किया तो हमारा बहुत ज्यादा एनहांस हो गया। मतलब डेटा जो नेशनल लेवल से एक्सपेक्टेड था वो रियल सेंस में था, हाइपर नहीं था। तो हमको मेनली निश्चय से पता चलता था, मेनली व्हाट्सएप ग्रुप से पता चलता था, और हमको मंथली रिपोर्ट से पता चलता था जो एनेक्सर 11 है। उसके अलावा पेशेंट हमारे पास ओपीडी में टर्न आउट हो जाते थे कि जी प्राइवेट डॉक्टर ने दिखाया, हमारी आईसी बहुत बढ़िया थी कि हम गवर्नमेंट ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, बट वो हमारे नोटिफिकेशन में है नहीं। तो ये थे जिनसे हमको पता चला। राइट, सो DTOs, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन दिस कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही एक सिंपल वे में अपने प्रोसेस को ले किया, उन्होंने अपने बॉटलनेक्स को पहचाना, बॉटलनेक्स उन्होंने एविडेंसेस के साथ पहचाना और उस पे काम करना शुरू किया। आप लोगों ने प्रोसेस मेजर पे काम किया है, बट प्रोसेस मेजर तक हम कॉन्क्रीटली कैसे पहुंचे, वो हम पहुंचे प्रोसेस मैप के जरिए, जिससे इन्होंने पेशेंट विजिट प्राइवेट प्रैक्टिशनर से देखा कि आईसी की अवेयरनेस हो रही है या नहीं हो रही है, पेशेंट फार्मेसी से रेफर हो रहे हैं पर लैब तक नहीं ठीक से पहुंच पा रहे, तो यहाँ पे उन्होंने गैप निकाला और उसको प्लग करने का कोशिश किया। थैंक यू डॉक्टर लोकेश। डॉक्टर लोकेश, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मनोज हियर, बहुत अच्छा मनोज लगा। सर, गुड मॉर्निंग फ्रॉम यूएसए एंड गुड इवनिंग फ्रॉम हियर। Yes, Thank you very much, and yes, great definitely job. good day to all the DTOs, and you will definitely enjoy the things. PDS yes, is marvelous, बहुत बढ़िया चीज है। बहुत बढ़िया। Thank you, So, thank you very much. two quick questions आप जाए उससे सर, पहले। हाँ, फर्स्ट, जो आपने करा ये महाराष्ट्र के DTOs भी कर सकते हैं? Do you think they'll have any difficulty in doing this? ये भी दूसरे DTOs सब कर सकते हैं क्या? सर, मुझे तो चैलेंज नहीं लगता। अगर किसी का स्पेसिफिक कोई क्वेरी हो, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर, अगर मेरे पास जवाब होगा। इट्स सिंपल है सिस्टम, क्योंकि परहैप्स हम इस पर शायद वर्क कर ही रहे हैं, लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक वे है। दिस इज बेसिकली साइंटिफिक वे टू डू द वर्क, जहां तक मैं समझ पाया सर। Exactly. Or putting it on a graphic form, जैसे आपने अभी ये दिखा रहे हैं जो graphic form में है, was that helpful, important? क्या सोचते हैं आप? डेफिनेटली सर, ग्राफिक्स से तो हमको एकदम क्विक, मतलब हमारी आई विजुअलाइज करती है, डिफरेंस दिख जाता है। सिर्फ डेटा पर या राइट अप में होता तो उसमें हम लोग को पूरा डिटेल पढ़ना होता है। ग्राफिक फॉर्म में जब हम उसको रखते हैं, हमने आगे जो आपने टीडीएसए में आपके जो टीम लीडर्स जिन्होंने हम समझाया, तो सडन विजुअलाइज होता है कि ये ग्रॉस चेंज आ गया, ग्रॉस नेगेटिव चेंज आ गया, ग्रॉस पॉजिटिव चेंज आ गया सर। Right. A picture is worth 1,000 words. So thank you so much, Dr. Lokesh. Wonderful having you here, and continue your good work. So thank you. Thank you very much. Thank you. थैंक यू डॉक्टर लोकेश। सो DTOs, आपने देखा कि प्रोसेस मैप क्या है। प्रोसेस मैप एक तरह से अगर मैं बोलूं कि प्रोसेस मैप बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेप बाय स्टेप एक फ्लो चार्ट है जो हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में देखा है और यूज किया है।
ये एक विजुअल टूल है, जैसे डॉक्टर मनोज ने अभी बात किया कि कभी भी कोई भी चीज जब आप अपने सामने लगा लेते हो तो आपको वो चीज ज्यादा समझ में आती है और उसकी सीरीज समझ में आती है। वो हमें हेल्प भी करता है कि किस तरह से फ्लो चलना चाहिए और हम किस तरह से चल रहे हैं। सो इट इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल टूल। सो डॉक्टर बुशरा, आर यू देयर? यस मैडम। हाय डॉक्टर बुशरा, कैसे हैं हेलो आप? मैडम, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, फाइन। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप पेशेंट का रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस फ्लो है, क्या क्या चीज फॉलो करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए? एक्चुअली मैडम, हमारे पास पेशेंट जब एंटर होता है, पहले तो जी हमारे प्रिजम्पटिव केसेस हमको आइडेंटिफाई करने, हमको ओपीडी से केसेस मिलते हैं जिसको हम लोग जी 4 सिम्टम्स के लिए स्क्रीन करते हैं। जी। एनसीडी क्लिनिक से मिलता है जो हमारा हाई रिस्क ग्रुप है। प्लस हम्म, हमारे पास एआरटी से पेशेंट्स आते हैं। उसके अलावा हम जो आउटरीच कैंप्स लेते हैं, जैसे जी रिमांड होम में है, जेल में है, जो हमारे नाइट शेल्टर्स है वहां पे है, जो रेसिडेंशियल स्कूल्स है बच्चों की, ये सब हम स्क्रीन करते हैं उनको। उसके जी बाद पेशेंट एक बार प्रिजम्पटिव, हम उसको आइडेंटिफाई करने के बाद निक्षय पोर्टल पे उसको एज ए प्रिजम्पटिव एंटर होता है वो। उसके बाद में उसका माइक्रोस्कोपी किया जाता है। माइक्रोस्कोपी में अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर माइक्रोस्कोपी में सिर्फ जेडएन स्टेन कर रहे हैं हम उसका, तो उसमें हम उसको यूडीएसटी के लिए उसका जीन एक्सपर्ट भी करते हैं, जी। और उसके साथ साथ में उसका एक्सरे होता है। अगर माइक्रोस्कोपी में निगेटिव आता है पेशेंट, तो हम उसका एक्सरे करते हैं। एक्सरे के बाद में अगर वो पॉजिटिव आता है, देन उसका स्टार्ट होता है, डीएसटीबी है तो उसका डीएसटीबी का ट्रीटमेंट है। और अगर माइक्रोस्कोपी हुई है और अपफ्रंट सीबीनेट हम नहीं कर रहे हैं, तो हम उसका यूडीएसटी करके, अगर वो एमडीआर है तो एमडीआर का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, और वो पोर्टल पे एज ए नोटिफाइड पेशेंट, डायग्नोज पेशेंट एंटर होता है, निक्षय आईडी मिलता है उसको। और ग्रेट। उसके साथ ही हम उसका, हाँ मैडम, आप कुछ जी, बोल, नहीं 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 डॉक्टर साहब, मैं कुछ नहीं बोल रही थी, आप बताएं हेलो, प्लीज। जी जी हाँ, जी आई डॉक्टर। एम ऑडिबल। यस यस, यू आर ऑडिबल डॉक्टर बुशरा। और पेशेंट स्टार्ट होने के बाद मैडम, उसका मेडिसिन स्टार्ट होने के बाद हम उसके घर के लोगों का भी, जो उनके कांटेक्ट है, उनका ट्रेसिंग करते हैं, उनकी स्क्रीनिंग होती है। अगर वो स्क्रीनिंग में टीबी डायग्नोस होते हैं तो उनका टीबी का ट्रीटमेंट होता है, वरना उनको टीपीटी दिया जाता है। तो इस तरह से बाकी प्रोसेस आगे के भी जो उनके पब्लिक हेल्थ एक्शन है, कोमॉर्बिडिटी के लिए हम लोग उनको स्क्रीन करते हैं कि अगर वो कोई कोमॉर्बिडिटी डायबिटिक है तो उसका ट्रीटमेंट भी साथ में स्टार्ट हो, अगर एचआईवी पॉजिटिव है तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। और बायो डायरेक्शनल एक्टिविटी भी, जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तो हम कोविड पॉजिटिव के टीबी स्क्रीनिंग करते थे, और टीबी जो पॉजिटिव उनका कोविड स्क्रीनिंग भी होता था। तो एक नई So, एक्टिविटी स्टार्ट की कोविड में। yeah, Dr. Manoj, isn't it great that she has given us the entire process flow? Yes, so this is really good. तो Yeah. DTOs ये बहुत अच्छा है, आप प्रोसेस फ्लो डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब मुझे ये पूछना है आपसे सब DTO से कि कितने लोगों ने ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाकर देखा है, और जहाँ जहाँ आपके ब्लॉकेजेस है, बॉटलनेक्स है, वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात करिए। Many of you may not have done it because this is a formal process that is done in often way. So Dr. Pratibha, can you show us how that is done? Definitely, sir. I will definitely show them, but let me just take them through that why we use the process map, why it is necessary. So, dear DTOs, it is necessary because जैसे हम अभी बार बार बोल रहे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, कोई भी चीज विजुअल आपके सामने होगी वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगी, आपको वो ये चीज दिखाने की कोशिश करेगी क्या चीज जो है, जो स्पॉटलाइट बेस्ड को स्पॉटलाइट कर रहा है, आपका प्रोसेस स्ट्रीमलाइन है या नहीं है, या आप कोई चीज को स्किप कर रहे हो, वो आपको दिखाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा। आप जब प्रोसेस मैप को, जैसे कि डॉक्टर बुशरा ने अभी प्रोसेस मैप को लेआउट किया, अगर इसी को हम लिख लेंगे और चार्ट बना के रख लेंगे, आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। एंड सबसे बड़ी बात, जैसे सिर्फ मैं आपसे बोलूं और मैं आपको कुछ दिखाऊं नहीं, आप सिर्फ कुछ ही % उसका आर्टिकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन है। जब हम उस चीज को लिख लेते हैं तो हम एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल ओपन करते हैं, हम अपने स्टाफ को, अपनी टीम को बता पाते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या चाहते हैं और कहाँ हमारे बॉटलनेक्स हैं। सो लेट अस गो फॉरवर्ड विद
how to draw a process map. This is very very simple process map. जो हमारा process map है वो अभी मैं आपसे share करूंगी. Just the flow I am just going to share with you. जैसे कि पेशेंट रजिस्ट्रेशन हुआ, पेशेंट रजिस्ट्रेशन के बाद में रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाद में पेशेंट डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए गया, प्रिस्क्रिप्शन हुआ पेशेंट का, डॉक्टर ने डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखे, उनकी रिविजिट हुई डायग्नोस्टिक्स रिपोर्ट्स के लिए, डॉक्टर ने दोबारा से रिपोर्ट देखा, आपने इंफॉर्मेशन इनिशिएशन ट्रीटमेंट किया एंड लाइनिंग एट द डॉट सेंटर एंड पेशेंट स्टार्ट द मेड. दिस इज अ जनरल द प्रोसेस. बट हियर इज द थिंग, हमने यहाँ पे प्रोसेस को ले डाउन कर दिया, बट हम यहाँ चाहते हैं कि आप लोग बॉटलनेक्स को निकालें, कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है उस चीज को हाईलाइट करें. जैसे पेशेंट रजिस्ट्रेशन, लॉन्ग वेटिंग टाइम हो सकता है, पेशेंट डायग्नोस्टिक्स के लिए आया और रिविजिट के लिए पेशेंट आता ही नहीं है, कहीं और चला गया, आपका ट्रीटमेंट इनिशिएशन टाइम पे ही नहीं हुआ. सो आई विल लाइक टू आस्क डॉक्टर ओंकार. डॉक्टर ओंकार, आर यू देयर? यस मैम. हाँ जी, कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? हाँ ठीक है मैम. डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएंगे कि जो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन में हम लॉन्ग वेटिंग टाइम क्यों हो जाता है निक्षेप पोर्टल पे? Actually मैम, the factors can be classified into 3 categories. यस प्लीज. एक patient related factor हो सकता है कि if the patient is visiting some other health facility for a second opinion. कभी कभी पब्लिक सेक्टर का पेशेंट प्राइवेट सेक्टर चला जाता है, कभी कभी प्राइवेट सेक्टर का पब्लिक सेक्टर में आ जाता है, तो उस वजह से थोड़ा सा मतलब जो डिले है वो पॉसिबल है. दूसरा मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि if the patient gets lost to follow up, the patient fails to revisit again at that particular healthcare facility if he's advised wrongly somewhere that he is not supposed to go again to that particular facility, then that could be a reason. Yeah. Other issue could be a lab factor कि मतलब अगर लैब के लेवल पे अगर रिपोर्ट जनरेट ना हो पाए किसी वजह से, अगर कुछ प्रोसेस उनका अगर सही नहीं है, उनका रिपोर्ट ना जनरेट हो पाए. सेकंड हो सकता है कि रिपोर्ट उनका हो गया लेकिन इट इज नॉट अपडेटेड ऑन द पोर्टल बाय द मैन पावर, द कंसर्न मैन पावर. ये एक इशू हो सकता है. एंड Right. थर्ड कुड बी एट द लेवल ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जहाँ पे वो पेशेंट विजिट कर चुका है, वहाँ पे मतलब अगर इफ द लैब हैज फेल्ड टू अपडेट, if the healthcare provider fails to update that particular report in the system, then that can be associated with the delay in the report being reflected in the portal. Excellent. Dr. Onkar, मुझे बहुत अच्छा लगा the way you categorized it. You categorized it in a wonderful way. You said patient factor, you said lab factor, and you said health provider factor. इस तरह से if you categorize in such ways, you begin to then see where the solution is. The beauty in doing what you're doing now, which is drawing the process map and then looking at the bottlenecks and then looking at particular areas and categorizing where the bottleneck is. So when you do an intervention, you'll say, hey, I need to do a patient-specific intervention because that's an important factor, or I need a provider-specific intervention. So DTOs, what we are talking about here is how to think. हम आपको solution नहीं दे रहे हैं. Solution आपको, you have to come up with your own solutions in your own DTO in district. Why? Because each district has a different problem. SETI can't come and solve every district's or help in every district problem. But we can do is we can help provide the approach towards that solution. So beautifully said and so well categorized. Great job. Thank you. So, yes, amazing. Thank you, Dr. Onkar. So, Dr. Manoj, if you allow me, so I will like to welcome Dr. Devendra Ripudaman. He was our first batch DTO, right? And he will be presenting the process map today. Dr. Ripudaman, are you there? He may be coming on, but we could have a, yes. Welcome. Dr. Devendra, how are you? You're on mute. Yes, if you... Am I audible now? Yes, 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 very yes. good. Yes, yes. No.
सर, सबसे पहले तो मैं मनोज सर को, रमन सर को और प्रतिभा मैम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी सभी डीटीओस के साथ में अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। और महाराष्ट्र के सभी डीटीओस को भी मेरा नमस्कार। तो हमारा जो प्रोसेस वर्क फ्लो था, एक्चुअली हमारा कोविड सिचुएशन को लेकर के हमने एनालिसिस किया था कि कोविड में हमारे साथ क्या क्या इश्यूज हो गए थे टीबी प्रोग्राम को लेकर के, और किस तरीके से हमने बॉटलनेक एनालिसिस किया, और देन वी केम अप विद द सॉल्यूशन। तो हमारा जो बेसिकली प्रॉब्लम था कोविड कंडीशन में, हमारा टीबी नोटिफिकेशन रिड्यूस हो गया था। हियर टीबी नोटिफिकेशन पर्टिकुलरली इन पब्लिक को हमने टारगेट किया था। एंड टीबी नोटिफिकेशन मींस हमने जो इंडिकेटर्स लिए थे इसमें निक्षय सॉफ्टवेयर से लिया था। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, अभी आगे आपको प्रोसेस मैप में बताऊंगा कि टीबी नोटिफिकेशन होते हुए भी कई बार क्यों हमको शो नहीं होता है। तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई को हमने देखा था, इस समय हमारे डिस्ट्रिक्ट में, इनफैक्ट एमपी और महाराष्ट्र में 2021 में कोविड पीक पे चल रहा था, शायद सेकेंड वेव चल रही थी और कोविड पीक पे था उस समय। तो उस समय फिर हमारी टीम ने मिलकर के इस पीडीएसए साइकिल के थ्रू एक एम स्टेटमेंट डेवलप किया हम लोगों ने कि भाई हम टीबी नोटिफिकेशन को वापस से हमको इंक्रीज करना है। तो अप्रैल एंड मई में जो कम था तो उसको हम इंक्रीज करके 63 इन जून, 65 इन जुलाई एंड 17 अगस्त का हमने टारगेट सेट किया कि हम हमारे जो नोटिफिकेशन है उसको इंक्रीज करेंगे। तो दिस वाज अवर मेन एम। सो प्लीज प्रोसेस मैप एक बार दिखा दीजिए। या तो अभी हम देख रहे थे, लोकेश सर ने भी बताया, ओमकार सर ने भी बताया कि हम प्रोसेस मैप कब स्टार्ट कर सकते बनाना, किस तरीके से हम उसको बनाएंगे। उसको बनाने के पहले हमको हमारा जो रूटीन वर्क फ्लो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से पता होना चाहिए। अगर हमको कहीं गैप ढूंढना है, गैप ढूंढने के पहले जो हमारा रूटीन वर्क फ्लो है वो हमें स्टेप बाय स्टेप पूरा पता होना चाहिए। और उस रूटीन वर्क फ्लो में किस मेन पावर का कहाँ यूटिलाइजेशन है, कहाँ हमें लॉजिस्टिक्स का यूटिलाइजेशन है, ये सारी चीजें हमें पहले रूटीन वर्क फ्लो के तहत एनालाइज हमारा होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं हमारे रूटीन वर्क फ्लो में, जहाँ हमने बिगिन लिखा है कि भाई डीटीसी में, टीयू में या पीएचआई में पेशेंट आते हैं, यानी ये मैं पैसिव केस फाइंडिंग के बारे में बोल रहा हूँ। और कोविड के समय आपको ध्यान होगा कि पेशेंट विजिट एकदम से रिड्यूस हो गया था हॉस्पिटल्स में। तो पेशेंट विजिट काफी रिड्यूस हुआ, तो वहां हमको देखना पड़ा। सेकेंडली, जो सेकेंड हमारा हमने देखा कि पेशेंट जब कम हुए तो डीएमसी में भी टेस्टिंग कम हुई। बट डीएमसी में टेस्टिंग कम होने के कोविड के कारण कुछ अनदर रीजंस भी थे कि वहां पर हमारे जो एलटीज थे वो ऑल्दो टीबी के एलटीज थे एनटीपी प्रोग्राम के, बट उनको भी कोविड के काम में एंगेज कर दिया गया था। तो इस तरीके से हमारे जो डीएमसी का जो फंक्शनैलिटी थी वो भी हैम्पर्ड हुई थी कोविड के समय में। फिर हमारा जो सुपरवाइजरी स्टाफ है, जो रजिस्टर में तो एंटर करता ही है नोटिफिकेशन, बट वो निक्षय सॉफ्टवेयर में भी दर्ज करता है। तो कोविड के समय में ये सिचुएशन भी आई थी कि निक्षय नोटिफिकेशन जो है वो रजिस्टर में, तो फिजिकल रजिस्टर में उन्होंने दर्ज किया हुआ है कि भाई हाँ टीबी पेशेंट आया है, ये टीबी पेशेंट पॉजिटिव है, इसका हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, बट स्टिल दे डोंट हैव टाइम टू रजिस्टर देम इन निक्षय सॉफ्टवेयर। और हमारे स्टेट में हमने ये देखा है कि जो भी यानी रिव्यू होते हैं वो सब निक्षय बेस्ड रिव्यू होते हैं, उसी से रिपोर्ट निकाली जाती है। तो हमको वो पेशेंट रजिस्टर्ड होने के बाद भी शो नहीं हो रहा होता है। एंड आफ्टर दैट बस हम फिर मेडिकेशन शुरू करते हैं। सो डॉक्टर साहब, सॉरी Yeah. जी, सो डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी, जैसे आपने सबसे पहले एक करंट फ्लो बनाया, ठीक है, हमारा जो प्रोसेस फ्लो है वो आपने बनाया, जो कि मुझे बहुत क्लियरली फर्स्ट लाइन में दिख रहा है। आपने ये जो लिखा है, ये क्वेश्चन मार्क, एक्टिव केस फाइंडिंग, एडिक्वेट टीबी टेस्टिंग डन, नंबर ऑफ नोटिफिकेशन, थोड़ा सा आप हमारे डिटेल्स को बताइए, ये क्या है? एक्चुअली ये जो आप क्लाउड देख रहे हैं, क्लाउड बेसिकली रिप्रेजेंट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग। यहाँ हम सोच रहे हैं, यहाँ हम और हमारी टीम जो इस पीडीएसए साइकिल में हमने जो टीम बनाई थी, ये टीम का एक कंसोलिडेट, सबकी अपनी सोच क्या है। यानी हमने ये नहीं किया कि हमारी टीम में
मैं जस्ट एक डीटीओ के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ या वर्कर के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, एक किसी इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव नहीं था, बट एक पूरा टीम वर्क की भाई टीम क्या सोच रही है उस समय, कि पेशेंट क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ कहाँ गैप्स है और कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, हम देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अभी जैसे कोविड सिचुएशन में जब पेशेंट हमारे पास पैसिव फाइंडिंग्स नहीं हो पा रही थी, तो हमने सोचा कि हम एक्टिव केस फाइंडिंग करेंगे। नाउ अनदर क्वेश्चन आ रहा है कि भाई जब पैसे भी पेशेंट ही नहीं आ रहा अस्पताल, तो हम एक्टिव केस फाइंडिंग कैसे कर लेंगे, कौन सी जगह है जहां पर हम कर सकते हैं इसको। तो आप उसके नीचे देख सकते हैं, क्लाउड के नीचे उसी समय हमको स्टेट से भी लेटर मिला हुआ था कि भाई हर एक डीटीओ HIV के लिए भी नोडल ऑफिसर होता है। तो HIV में ऑलरेडी हमको लेटर इशू था कि भाई हमको अपने केंद्रीय जेल में जाकर के भी कैंप करना है उसी दौरान। तो हमने इस चीज को कोप अप करने के लिए कि भाई पेशेंट हॉस्पिटल नहीं आ पा रहा, तो हम जहां जा सकते हैं, जहां हमको जाने की अनुमति है, वहां जाकर के हम क्यों ना कैंप लगाएं। तो हमने हमारे यहाँ के सेंट्रल जेल में कैंप लगाया। स्टेट से लेटर इश्यू हुआ था, बीडी वर्कर्स को हमको स्क्रीन करने के लिए निर्देश थे। इसके अलावा NRC में भी ऑल्दो कोविड सिचुएशन था, बट डिस्पाइट ऑफ दैट NRC में भी निरंतर एडमिशन आ रहे थे। तो ये वो जगह थी जहां हमने कुछ इंटरवेंशंस ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कि हाँ ठीक है, चलो हमारे पास पैसिव केस फाइंडिंग नहीं हो रही, हम इस तरीके से एक्टिव केस फाइंडिंग और वो भी एक वल्नरेबल पॉपुलेशन में कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफी यूजफुल था। एक तो एक्टिव केस फाइंडिंग था, वो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन में। तो अच्छा, सेकेंड चीज ये था कि एडिक्वेट टेस्टिंग डन। यहाँ हम ये चाह रहे थे कि हमारा LT जो है वो टीबी का NTP का काम छोड़ करके उसकी ड्यूटी कोविड में लगा दी गई थी, तो हम उसका यूटिलाइजेशन, उससे एडिक्वेट टेस्टिंग कैसे कराएंगे। तो उसके लिए भी रिसेंटली एक लेटर इशू हुआ था, आपको ध्यान होगा कि क्रॉस रेफरल्स, जिनको कोविड हुआ हो उनके लिए टीबी की जांच कराना अनिवार्य है, जिनको टीबी हुआ हो उनके लिए कोविड की जांच कराना अनिवार्य है। तो ये एक लेटर रिसेंटली इशू ही हुआ था, तो हमने उसको भी एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए कि चलो हमको इतना राइट मिला, अब हम LT के ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर बना सकते हैं। नहीं तो उस समय सिचुएशन ये था कि LT को कोविड के काम में लगा दिया है, वो कोई काम नहीं करेगा, ये सिचुएशन था। तो उस लेटर को भी हमने एक अपना रेफरेंस बना करके और वापस से हमने एनफोर्स्ड किया उन LTs को कि भाई आप ठीक है, आप टीबी के लैब में इस समय काम नहीं कर पा रहे हैं, बट आप एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि जो कोविड पेशेंट है, जो 4S सिम्टम्स जिनको टीबी के हो रहे हैं, सिमिलर सिम्टम्स हो रहे हैं, उनका आप एटलीस्ट स्पुटम सैंपल्स आप कलेक्ट कर लो, तो हम STLS के माध्यम से उनको हम टेस्ट करा लेंगे। तो इस तरीके से हमने DMC में भी जो कोविड के पेशेंट आ रहे थे उनके माध्यम से भी हमने टेस्टिंग को इंक्रीज किया। So, Dr. Saab, Yeah. before we proceed, I just want to ask one question here. कि जैसे आपने लिखा निक्षय नोटिफिकेशन, राइट? सो निक्षय नोटिफिकेशन आपका सिम्टम था या ये कॉज था? एक्चुअली मैं इसे सिम्टम ही कहूंगा जी। सिम्टम इस कारण से कहूंगा क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट वैसा था हमारा कि हमारे पास, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे पास मेन पावर एडिक्वेट नहीं था, मेन पावर NTP में था, बट वो एंगेज कर दिया गया था कोविड में। इस कारण से मैं कहूंगा कि हमारा मेन पावर कम था। जी। तो जब मेन पावर इस तरीके से कम होने के बाद फिर हमने उसको वापस से रीएनफोर्स किया, और हमने जब अपने फिजिकल रजिस्टर्स भी चेक किए कि भाई पेशेंट नोटिफाई तो हो रहे हैं बट निक्षय में क्यों नहीं दिख रहे हैं, फिर आपने तो कॉज पे वर्क किया इसमें? या तो हमने कॉज पे वर्क किया। फिर हमने उन्हीं STS को, सुपरवाइजर्स को, TBHV को, इनको वापस से एंगेज किया कि भाई आप लोग अपने फ्री टाइम में, चलो ठीक है दिन भर आप ये काम कर रहे हो, बट निक्षय नोटिफिकेशन आप निक्षय में एटलीस्ट सॉफ्टवेयर में दर्ज तो कर सकते हो। जब आपने फिजिकल रजिस्टर में कर लिया इतनी कठिन सिचुएशन में, तो उसी नोटिफिकेशन को निक्षय सॉफ्टवेयर में दर्ज करने में क्या प्रॉब्लम है। तो फिर हमने उनको एनफोर्स किया, दोबारा से मोटिवेट करके, थोड़ा सा उनको थोड़ा सा प्रेशर भी दे करके, जो जिस तरीके से मान गया उसको उस तरीके से हमने किया, तो वो निक्षय नोटिफिकेशन फिर सॉफ्टवेयर में भी दिखने लगा। So Dr. Yeah, so Dr. Devendra, what a powerful and beautiful example. Congratulations, बहुत अच्छा काम आपने करा। 2-3 चीजें मैंने जो आपने बताया वो उससे I have learned and I'm seeing, and each time I learn new things as I talk to the DTOs.
So what you did was, okay, in the area of notification, Joe, what the process is, you sort of pull that up on the screen, you put that out, and then flow map, you have developed that the flow map is there. And then in the flow map, then you took and then said, what are the bottlenecks? And then what I really love, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो cloud, जो आपने cloud बनाया, वो cloud में brainstorming करा आपने, right? You did brainstorming, you got your team together. आपने अकेले ही brainstorming नहीं करा, आपने अपने, you didn't just sit in your room and do it alone. You see, that is one of the biggest mistakes we as often managers or leaders, or we think as DTOs, ki, hey, I know what's going on. I will decide on what is the problem and what is the solution, and here it is, you do it. Failure, failure, failure. DTOs, never do that. This is a team effort. If you do that, that's like Modi ji saying, oh, theek hai, tomorrow I'm going to eliminate TB. That's it. That he can't do it. He has to run a whole country. You have to run an entire district with TB elimination. You need your team. Do the brainstorming with your team. That is a major thing. और आपने वही बिल्कुल सही बताया, Dr. Devendra, कि brainstorming with the team is essential. And then you came up with solutions one by one. And when you were doing brainstorming, you were doing something really interesting. And we'll talk about that. What you were finding is, what is the root cause? What was causing that notification to be low? What was causing that Nikshay notification to be lower than what you would have expected? You went and you found what we call root cause analysis, RCA. This is a universal term. This is a way of completely re-looking at a problem. You can even do that with your kids as well. We'll come to that in a minute, but Dr. Devendra, what a wonderful presentation. Thank you so much. Thank you very much, sir. सर मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि ये PDSA मैं एक्चुअली DTOs को सभी को रिकमेंड भी करना चाहूंगा. नॉट ओनली DTOs, ये हर प्रशासनिक अधिकारी को जो अपने कार्यालयों में बैठकर कर रहे हैं ये काम, क्योंकि PDSA हम अपने मन में तो बना लेते हैं, लेकिन जब तक उसको लिखते नहीं है तब तक हमें पूरा बॉटलनेक जहां जहां गैप है हम वो एक्चुअली ढूंढ नहीं पाते हैं. जब हम उसे लिख लेते हैं तो एक्चुअल वो मिसिंग लिंक भी हमको मिल जाता है. वो बात अलग है कि हम इसको सीखने के बाद फिर हम उसे मन में करते रहें, लेकिन इसको शुरू से लिखने की एक हैबिट हमें डालना चाहिए. और आपके इस PDSA प्रोग्राम का मैं फर्स्ट बैच में पार्टिसिपेंट भी रहा हूँ, तो इसका यूटिलाइजेशन मैं बता रहा हूँ, हमने नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में जब किया तो 2022 में नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ने भी सब नेशनल सर्टिफिकेशन में ब्रॉन्ज मेडल अर्जित किया है. तो इसके लिए मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा कि PDSA का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कि हम जो अपने गैप्स को फाइंड कर पाए, कहाँ क्या क्या कमी है, जो हमको सब नेशनल सर्टिफिकेशन में कहाँ किस चीज़ की कमी आ रही है. तो इसी चार्ट को हमने फॉलो किया, इसी प्रोसेस मैप को फॉलो किया, तो हम उन गैप्स को आइडेंटिफाई कर पाए. और जब आइडेंटिफाई कर पाए तो हमने वो सारी जो शर्तें थी क्लेम करने के पहले कि सब नेशनल सर्टिफिकेशन की क्वालिफिकेशंस क्या है, ये इतना CTD स्कोर इतना होना चाहिए, इतना टेस्टिंग होना चाहिए, इतना नोटिफिकेशन कम होना चाहिए, तो ये हम सारी चीजें इस PDSA प्रोसेस मैप के थ्रू ही कर पाए थे. तो उसके लिए थैंक यू सर. Amazing. Thank you, Dr. Devendra. And not only that, Dr. Devendra इतने इंस्पायर हो गए कि इन्होंने MPS ज्वाइन कर लिया PHFI दिल्ली में to have a full management skills. Thank you, Dr. Sir, for sharing the wonderful PDSA of yours. Thank you, sir. So now, Dr. Manoj talked about, RCA. So, मैं Dr. Vinita, are you there? हेलो. यस मैम. जी डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? हाय. हाँ, अच्छी हूँ. आप कैसी है? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ. अच्छा डॉक्टर साहब, मैं वैसे आई वाज जस्ट आस्किंग, आप गार्डनिंग करते हो क्या? हाँ, sometimes, not very much fond of. So when we do gardening, तो हमारे सुंदर सुंदर प्लांट्स में कुछ अनडिजायरेबल अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, तो आप या स्टेम निकालते हो या उसको बिल्कुल रूट से निकाल देते हो?
रूट से निकाल देते ना, क्योंकि वो फिर दूसरे प्लांट्स को सड़ा सकते हैं ना। Absolutely. So, Dr. Saab, what is the weed in your system? आपके सिस्टम में वो weed unwanted plant क्या है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चैलेंज और अनवांटेड प्लांट है माइग्रेशन, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिकॉज जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, वापी, वलसाड़, पालघर, ये नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स है और सब अपनी हेल्थ फैसिलिटी के लिए यहाँ पर आते हैं। बिकॉज हमारे यहाँ गवर्नमेंट फैसिलिटी काफी अच्छी है, तो उनको नियर पास पड़ता है, तो वो स्टेट तो चेंज हो जाता है, लेकिन फिर हमें काफी दिक्कत आ जाती है निक्षय में, फिर उसका नोटिफाई करने में और एनरोल करने में। ओके, और आपको ये कॉज है या आपको कैसे पता चला कि हाँ ये पेशेंट माइग्रेशन हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? तो इसका कॉज आप आइडेंटिफाई कर पाए हैं? इसका कॉज हाँ हम आइडेंटिफाई तो कर पाए हैं, बिकॉज जैसे कभी कभी पेशेंट जो हम ट्रेस नहीं कर पाते हैं, लाइक बिकॉज ऑफ, क्योंकि उसका वैलिड फोन नंबर नहीं होता। हम लोग निक्षय में रजिस्ट्रेशन के लिए काफी डिटेल्स जो पूछते हैं फर्स्ट विजिट पे, जैसे उनका फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया। अब जो डीएनएच के पेशेंट है दादर नगर हवेली के, उनके यहाँ तो हम पर्सनली जाके विजिट कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई वलसाड़ का एड्रेस बता रहा है, पालघर का एड्रेस बता रहा है, तो वहां पे हम विजिट करके फिजिकली चेक नहीं कर पाते कि वो वहां रहते भी है कि नहीं। अब वो हमें मानना पड़ता है कि हाँ उसका एड्रेस सही होगा। ग्रेट, तो थैंक यू। वो एक कॉज है। थैंक यू डॉक्टर विनीता। डॉक्टर मनोज। So really thank you, important. ma'am. Yes, very good, Dr. Vinita. So what we need to be talking about is what is a symptom and what is a cause. I think that's really important. And as DTOs, you have to recognize those two. Let's spend some more time with that. So here is a wonderful diagram. It's so much fun. So जो आप देखते हैं, what's on the top are symptoms. Those are the trees, the branches, right? When you go really deep down, the issues come from, the problem comes from a root cause. Our job as DTOs, our job as investigators in figuring out what the problems are and why things are happening. It is, we have different tools that we have to utilize to find those root causes. It could be something simple as the 5 whys, fishbone diagrams, which we'll talk about more, cause mapping, and brainstorming. And I can explain this actually with a story. मुझे story बोलना बहुत अच्छा लगता है, but if you go to the next slide, I'll share with a simple story. So I'm an infectious disease doctor. So recently a nurse called me and from the hospital, my patient was in the hospital, and she said, "Doctor, Mrs. Jones has a fever of 102, right? She has a fever." The nurse identified the problem. The nurse ko malum hai ki kya problem hai, fever of 102. Good job. And she did the right thing. She called me. So nurse calls me and she says, can we give the patient some, we call it Tylenol, you call it paracetamol. Can we give them some Tylenol and help the fever come down? Okay, that is good. Now, mind you, for the past 4 or 5 days, the patient had no fever. They had an IV line in, right? They were having a urine catheter in, and they were in the hospital for some time. So interesting. Now, DTOs, think on this for a minute. As a nurse and as a doctor, what is the difference? Should I think on it and say, oh, okay, give him paracetamol, give the patient paracetamol, and then we are done with it? Or should I do something else? So this is where the difference comes in. The nurse is only looking at the symptoms. Most people are only looking at the symptoms and they want to just treat the symptoms. So give paracetamol and then they'll be done.
However, those of us who are doctors or in leadership position, managers or district managers, we need to figure out why that fever occurred. Why? What we need to do is a root cause analysis. We need to figure out. And so when I visited the patient, I looked, and sure enough, the IV had become infiltrated. And that was identified. The nurse didn't even think about doing some of those basic root cause analysis of why the fever. The thought didn't even come. Often, I will say this, DTOs, the biggest problem is so often, our TBHVs, our STLS, and others don't take the time to look at the root cause analysis. Often what you have to do is to take them and help them do the root cause analysis. And that makes all the difference. And sure enough, we took the intravenous out, we started antibiotics, and the fever went away. Imagine if I hadn't done a root cause analysis, if I hadn't figured out why that fever was there, it would continue. We would still treat the symptoms. Again, really important. Why are we doing the whole process map? The reason we do the process map so we can see diagrammatically, and then what we do is we take and identify where there's a potential problem, we do a root cause, and then we find a solution. So a long story, but Dr. Pratibha, it's a very telling story. And it makes all the difference. And that is why doctors are doctors in doing what they do, because they go and find the root cause of a fever, a cough, and others. So, Dr. Manoj, I would like to hear this same thing from one of our DTO. What is their view, how they do it, right? So, Dr. Sumitra, are you there? Ma'am, Dr. Sumitra is not here. She is still stuck up at the hospital. So, no problem. Yeah. Thank you. So, let's move forward. So, what is the root cause analysis? Like Dr. Manoj told us, it is something which will help us define the underlying causes. Like we have shown you one beautiful diagram which is clearly stated that what is the underlying cause of it. We have to identify and we have to start taking actions on it. So it also helps you to basically identify and implement the most effective solution. When you are writing down something and you are having something visual in front of you, you'll pick something which is very, very relevant to you. Root cause analysis not only used for something goes bad, it also used for when something is really doing well, because we want to use it for a better purpose. And like in previous session I said कि जितने भी आपके लोग हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, उनसे आप बात कीजिए, उनसे जानिए उन्होंने क्या ऐसा किया जो हम कर सकते हैं. दैट इज प्रिसाइजली वी आर टॉकिंग अबाउट द रूट कॉज कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जो हम भी कर सकते हैं, हम भी इम्प्रूव कर सकते हैं. नाउ common root cause analysis are of 3 types, the 5 whys, fishbone diagram, and Perrier mode effect analysis. 5 whys are very, very simple. We talk about the 5 things, 5 questions simultaneously, and we get the answer. Today, we will be discussing about the fishbone diagram, and in next session of ours, we will be discussing about the FMEA. So, fishbone diagram, simple, जैसे दिखता है वैसे ही बोला जाता है. फिशबोन बिकॉज ये एक फिश को रिप्रेजेंट करता है, फिश के स्केलेटन को रिप्रेजेंट करता है, बट इसको हम कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहते हैं. सो फिशबोन डायग्राम एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, आप अगर देखेंगे तो इसके जो स्पाइक्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मटेरियल, मेथड, मैन पावर, मशीन, इक्विपमेंट, environment, measurement. As a management person, we always divide things in some buckets. So अगर हमें फिशबोन निकालना है तो हमें एक buckets डेवलप करनी पड़ेगी, जो कि इन्होंने डेवलप करी, मैनेजमेंट मास्टर्स ने डेवलप करी, और इस कैटेगरी में उन्होंने उसको डाल दिया. इसकी भी उन्होंने सब कैटेगरीज बनाई. जैसे मटेरियल है, मटेरियल में अगर आप स्ट्रेट एरोज देखेंगे तो दीज आर द प्राइमरी कॉजेज एंड इसके सब एरोज विल बी द सेकेंडरी कॉजेज. सो इसको लेकर उन्होंने ये लिखा कि प्रॉब्लम क्या है, एंड इसमें हम देखते हैं कि हम कैसे इससे अपना सोल्यूशन निकालते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. वी विल हैव डिटेल एग्जाम्पल ऑल्सो ऑन अ पेशेंट काउंसलिंग. सो दिस इज वन
लाइक रॉन्ग सैंपल कलेक्शन। अब आप देखिए आपके सामने है पर्सन में आप जब अपनी टीम से ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे आपको पता चलेगा, आप वो चीजें जो पर्सन रिलेटेड है वो यहाँ पे लिख सकते हैं कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है या शॉर्टेज ऑफ ट्रेन स्टाफ है, मेथड में प्रोसेस नॉट डिफाइंड है या प्रोसेस नॉट इम्प्लीमेंटेड है, मशीन में बारकोडिंग मशीन वर्क नहीं कर रही है फॉर एग्जाम्पल, मटीरियल में इनएडिक्वेट नंबर ऑफ स्पूटम कंटेनर्स है या नंबर ऑफ डिस्प्ले ऑफ प्रोटोकॉल्स है या नो हैंडआउट्स फॉर द पेशेंट्स हैं या एनवायरनमेंट नॉइजी एनवायरनमेंट है, हाई पेशेंट इनफ्लो है, कलेक्शन एरिया जो है वो क्राउडेड है। जैसे अभी डॉक्टर रिपु दमन ने बताया कि उनको एनवायरनमेंट में इशू आया क्योंकि कोविड के कारण सारा का सारा जो एनवायरनमेंट था, जो टीबी का एनवायरनमेंट था, वो कोविड की तरफ शिफ्ट कर दिया गया, जिससे उनको प्रॉब्लम आई और निक्षय में वो उन्होंने प्रॉब्लम फेस करी। सो लेट अस सी हियर, अब रॉन्ग सैंपल कलेक्शन में क्या कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर इनएडिक्वेट नंबर ऑफ स्पूटम कंटेनर्स हैं और एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा नॉइजी है, क्राउडेड प्लेस पे मेरा सैंपल कलेक्शन है और बहुत सारे लोग आते हैं, तो रॉन्ग सैंपल कलेक्शन होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। सो दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रॉन्ग सैंपल कलेक्शन क्यों हुआ। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि मेरी बारकोड मशीन वर्क नहीं कर रही हो और प्रोसेस नॉट डिफाइन हुआ हो। ये भी है कि प्रोसेस डिफाइन है, बारकोडिंग मशीन ठीक कर रही है, पर स्टाफ जो है वो ट्रेन नहीं है और हाई पेशेंट इनफ्लो हमारा चल रहा है, राइट। सो इस तरह के कुछ कुछ चीजें हैं जो हम देखते हैं इन रूट कॉज एनालिसिस। नाउ I will like to call upon Dr. Vineet Chadha to explain in detail regarding the process map for counseling of TB patient. Dr. Chadha, are you there? Yeah, Dr. Pratibha, good evening. Thank Good evening, you. sir. I am actually really glad that you have taken counseling as an example, because counseling of TB patients and family members, as everybody is aware, is very critical to rendering high quality care. Now, this map is actually just to show the time points when you have the opportunity for counseling of newly diagnosed TB patient and their family members. So you have a presumptive TB patient, you collect sputum, the result has come positive, and then you call the patient and he comes for a second visit. So you have the opportunity for counseling. The test was negative, you conduct other tests, you have x-rays and things like that, and then patient is diagnosed. There is a opportunity that you have to counsel him on various aspects of TB, cough hygiene, treatment duration, and all those kinds of things which everybody is aware of. And then you also, at the time of counseling, find out whether there are any family members with TB symptoms. This can also be done during home visits by community health volunteers, and then you have to counsel the family members. Now, please go to the next slide. Now, the quality improvement team at a secondary level care hospital, let's say district level hospital, that they identified a problem that TB patients were receiving insufficient information on these three aspects, that is cough hygiene, side effects of anti-TB drugs, and contact trace. So as Dr. Lokesh Gupta said, Dr. Ripu Daman also said that we have a mental picture about why it is not happening. Dr. Jan said that let us not look at the symptoms. Let us find the cause. So root cause analysis is finding about digging deeper, looking beyond the superficial causes of a problem. So the quality improvement team held a brainstorming session as one of the methods that was pointed out by Dr. Jain also. And so they found that the hospital was really understaffed, and MOs were not involved in any counseling. They'll leave it to the paramedical workers. As far as home visit counseling is concerned, TB champions have not been identified in many areas. Family members, once they have symptoms, they are referred by the ASHA workers to the hospital. They are reluctant to come. Well, the staff is not adequately trained how to counsel, how to obtain the feedback, whether they have understood what they ought to. Because TB champions are not trained, because community health volunteers were not there, so the home visits were not being undertaken. At the facility, when TB patients are newly diagnosed, the waiting rooms were really crowded. There was no physical space for conducting counseling. There are no job aids. We expect counseling to be done just on 1%, 2%. But in fifth batch, Dr. Uma Shankar did a fantastic job of PDSA, where he showed that when he used a booklet
to demonstrate the counseling levels improved and the treatment outcome and the treatment adherence levels also improved. And similarly, there is no checklist to find out whether we have explained the patient about all the aspects, specifically these 3 aspects, yes and no, or something like that. So if we have a kind of checklist, that will help it. And then, of course, we have no tool to say whether counseling was satisfactory and unsatisfactory. So these are the causes identified, and then, of course, they proceeded on to find the solutions, and that maybe we'll discuss in some other session. Thank you so much. Thank you, Dr. Chadha. Dr. Manoj. Excellent. Dr. Chadha, what you showed is the depth of which a fishbone diagram is utilized. And then just taking a simple example, you've identified, okay, it could be as simple as a checklist or a diagram that can be utilized. And DTOs, what we can do is you identify that issue, and there's a PDSA in using a diagram to educate and inform patients. And at the end, you can look at if the outcome is better or not. So great example and great work. Good. Thank you, Dr. So over to you, Ramanji. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Manoj. Thank you, Dr. Pratibha, Dr. Vineet, Dr. Lokesh, and Dr. Ripudaman. What a wonderful session to understand the process map. And maybe next session, what we will do is what we had started in the breakout rooms. जैसा हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया था, जो था हमारा पब्लिक नोटिफिकेशन, हमने फिर उस पब्लिक नोटिफिकेशन एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को we went into the breakout room and we all made our own independent aim statements. Then next Friday when we met, we looked at our aim statements and we culled out the process measures out of that aim statement. And we realized how a same common problem statement led to variety of process measures. Next time, if the time would permit, we will have a look at the process map also in the same manner, that when we will try and look for the gaps, when we will try and look at the root cause analysis, each one of us for a common problem, which could be public notification, will reach at different reasons which are applicable in your district, contributory towards low public notification. It will be a wonderful exercise, and if we cannot do it virtually, we will try and do it during the in-person session. So wonderful. Thanks a lot to the faculty. And I also wish to, 3 minutes there, ask Ms. Sharvari if she has any update for all of us for the in-person session. Sharvari, over to you. Hi, Details. Thank you so much, Raman sir. So just an update, as we had shared earlier, we have moved the meeting venue to Pune. So here are the details where we are staying. So we have booked Sheraton. 5th and 6th is the date of the in-person. I have got responses from 47 DTOs till now regarding their bookings. I will request the other DTOs to kindly fill up their Google form so that we can make the bookings as earliest. And please also mention any remarks if there are from your side in the Google form. And this was the update from my side. If you need anything, any other support regarding the travel or anything, please reach out to me or Pooja. And we would be sharing the details and the guiding document on travel requirements with you by tomorrow or Monday. And that's all. Thank you so much. So Thank you. Forward to meeting all of you for the 100% attendance there. Thank Yes, you. absolutely. DTOs, the in-person meeting is really a great culmination of the knowledge that we have acquired over the past 3 months, 4 months, and the next 3-4 months. Really important to spend time together and to have a conversation of how we can put the PDSA into our day-to-day activity. I'll tell you, we've had ratings of 4.8, 4.9 out of 5 on every single one of the in-person meetings. So DTOs, you will enjoy this thoroughly.
Thank you. Thank you, Dr. Manoj. Thank you so much. And one more reminder, DTOs, that we have milestones governing this course. And each milestone at any point in time should be met for us to qualify for in-person meetings, for the certification and everything else. And the milestones are 80% attendance at any point in time, and the PDSA milestone, which is currently in progress, should be also met. So right now, the aim statement is the milestone which is in progress. The QICs are in touch with you. Please make sure that your aim statement and thereafter the PDSA teams are ready before we qualify to meet in person. I'm sure the QICs will help you achieve your aim statements. Yeah, absolutely. The milestones are very simple, DTOs. At the end of the course, you will also get a certificate from Emory, from CTD, from SETI, and all of the faculty as well. So really important. It has to be fair for everyone, because the contribution and the work that you do is going to be credited for that certificate, and for that certificate to have value really means for us to go through the process. So thank you so much. Thank you, Dr. Manoj. And all it remains for me is now to thank the Government of India, the Central TB Division, for giving us this wonderful opportunity to reach out to you guys and share our knowledge with you. Thanks to USAID and the Union, thanks to NTI faculty, thanks to the faculty at SETI, the staff at SETI, which is working really very hard to make your stay wonderful, comfortable, memorable at Pune. Thanks to the IT team, and thanks to these wonderful QICs. And once again, DTOs, my question to you: how many of your team members have reached out to you today that they volunteer to be part of your PDSA? How many of yours? Please raise your hand and showcase, or you can put a message in the chat. Okay, Dr. Kirotkar, thank you so much. How many of your team members have reached out to you on their own, telling you that we volunteer for PDSA? So, Yes, ma'am. Yes, sir. Thank you so much for confirming it. And all I want to say was, thank you, Dr. Batuddin. Thank you so much. This was just one session we had with your team. Okay, we'll make sure we make your team very, very strong, because we strongly believe that a strong team will make a strong DTO. So we will very soon start our weekly meetings with you and your team. Thank you so much. Have a great weekend. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Thank you.